Second is IoT for transformer, and third is IoT for cold storage. So for diesel generators, in Delhi NCR there has been a huge problem. So we have pioneered a universal solution. How it is universal? Because it can be used on any make DG, any OEM, any version, any generation, any make, any model. So whether your diesel generator, DG means diesel generator, is 20 years old, we can put our device and get the real-time data. So one of the application is for diesel generator. Second is for the transformers. As you know, in summers you have seen many of the transformers being exploded. Why? Because there is over burden on that equipment. हीट हो जाता है वो, एंड वी डू नॉट नो कि कब उसको टर्न ऑफ करना है. सो आईओटी हेल्प्स देम प्रिडिक्टिव कब मेंटेनेंस होना चाहिए, कब उसका मतलब कब वो उसके एक्सट्रीम स्टेजेस पे काम कर रहा है. वी शुड नो. हाउ डू वी डू इट? वी इंस्टॉल अ डिवाइस ऑन अ we install a small device. It is electronic device, and then it sends the data through SIM, through the internet, and it is captured in the databases, and then real time analytics are being shown. Our consumers could be anyone from discoms mean distribution companies, which like DHBVN is one of the discom, uh, UPPCL, BSES. So these are certain customers that we are targeting to for this particular solution towards smart transformation. Sorry, for this particular solution of IoT for smart transformers, we are catering to these industry players. So, and transformers could be installed in any industrial unit. If you see Maruti in Gurgaon or in Manesar, they have huge plants, and they are also coming up in Kharkoda. There also they have their dedicated transformers. The industry wants to know whether the device, whether the assets, the transformer that they have used is performing well or not. Whether when do they need maintenance. So these are the key areas that we give them insights on, and basically it enhances the assets life and also give them the interruption fee period for operations. तो अगर उनके बिजनेस ऑपरेशन हैम्पर नहीं होंगे इन सब छोटी छोटी चीजों से, then they would be able to focus more on their production and generate more output. Generating more output means generating more profits. So this is a brief about Edibit's innovation and the Uh, application. I like to introduce myself now. yeah. Uh, So, that so I is uh, like if you have a problem right now, that you are trying one problem, and sorry, proposing solution. sorry. Uh, Yeah, Harsh, I'm just talking about your company. That's why I'm just briefing to the students for now. Okay. Yeah. Let me know when to resume. Yeah. Sure. The thing is that now you have a problem, now you have, and then you have a, the task is coming up with a various solution, which is viable, and if you solve that problem, and it definitely will get benefited out of it. So what Hans is doing here, like see, starting from his career, finding a right problem, and the process he has followed to solution of this problem. That's an important character of this session. So you need to understand how he like to solve this problem, so that you can implement the same to your current task as well. So that's what the session is. That we keep engaged. That keep this session for that only. Yeah, Harsh, please continue. Okay, so I have been working with various startups as a strategy and operation lead. Right now, I'm also associated with Edibits Innovation, and I carry experience across strategy, operations, and technology
by building new products. So this is my expertise, and I'll help you share some actionable insights about how you can take the idea to the market, validate it, and then make sure when you get to the market you are accepted. So this is the reason I'm here to share you insight. So first and foremost, you need to identify the challenge, and challenge could be anywhere. It and a challenge creates an opportunity for you to create a solution, and that solution can be commercialized and or monetized to give you a scalable business. So this is the whole idea. I am sure we can see n number of challenges around us, n number of problems. It is just what is there, what clicks you, and then you can get the business out of it. So I visited the campus and I saw that there was uh, a lot of students were roaming here and there. Uh, I I actually thought one problem to share it with you. So people are also doing it. So you see in universities, people whenever every there are huge universities where people walk miles. So a problem could be something like generating energy from the shoes. So you could create certain types of infra or the tiles wherein when you walk onto it, it generates the energy for the school or the university. So you can see n number of ideas by just observing, and how you can put it into the actions, how you can scale it to the business is what I'm going to showcase you today. So once you have the idea with you, you need to validate it. So what does it do? What does validation do? It reduces the risk, it ensures that your product has a market fit, and you need to avoid common mistakes. So how can you reduce risk? How can you ensure there is a product market fit is what we need to discuss on. Firstly, while whenever you reduce the risk, you reduce the risk of getting a failure. So we'll see the steps how you can reduce the risk. But on the other hand, ensuring a product market fit is very essential for your success, for your startup idea success. Now, firstly, once you have the idea, you need to define what is it exactly, what problem am I solving. This is one of the most fundamental step in the stage of scaling it to the commercialized product, because you need to make sure what is the problem that you're solving, what is your solution, who are your audience, and what is the value proposition that you're going to give it to the market. So why it is very important is until you are very crisp and clear on what problem you are solving, you won't be able to refine your solution. And uh, you need not to cater to everyone in the industry. You need to find your niche and just cater to that. The market is huge. There is no boundaries. You can export your product to any country, any part of the world. The market is open. And if your product has the capabilities, अगर प्रोडक्ट में दम है ना, तो आपको कहाँ कहाँ से अप्रोच किया जाएगा खरीदने के लिए, यू वॉन्ट इवन इमेजिन। ठीक है, तो अब वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है, ये एक सर्टेन एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। वैल्यू प्रोपोजिशन है कि आप ऐसा क्या ऑफर कर रहे हो विच इज वन ऑफ अ काइंड। फॉर एग्जाम्पल, हम एडिबिट्स इनोवेशन आईओटी फॉर डीजल जनरेटर ऑफर कर रहे हैं, बट हमारा यूएसपी या वैल्यू प्रोपोजिशन ये है, इट इज यूनिवर्सल। यू कैन यूज इट फॉर एनी मेक, एनी मॉडल, एनी कंपनी का डीजी, कहीं पे भी लगाओ चल जाएगा। सो दिस इज आर वन ऑफ द यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन विच वी आर ऑफरिंग टू द क्लाइंट और द कस्टमर। सो इन एंड ऑल, आपको आइडिया को इतना क्रिस्प रखना है दैट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन वन लाइन,
Secondly, your solution should also be in one line. So if I recall, मैं आपको बोलूँगा what does IoT Edibits innovation do. Edibits innovations provide innovative IoTs to reduce your uh, process burdens and increase the business efficiency by monitoring your assets. This is what I will say in one line. This is what IoT do. This is how you need to create कि आपका idea क्या है, and you need to make sure that you are able to spill it in one sentence, and your solution should also be spill it in one sentence, and सामने वाले को समझ आना चाहिए, and आपका audience कौन है आपको वो भी एकदम clear होना चाहिए. नेक्स्ट, वंस यू हैव द आइडिया यू नीड टू डू द मार्केट रिसर्च. ठीक है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है, देन यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ कि मैं जो लेके आ रहा हूँ प्रोडक्ट वो कैसा है, वो कहाँ पे फिट हो रहा है, व्हाट गैप्स एम आई फिलिंग. ठीक है, एंड देन उस गैप्स के लिए whether there is a problem or not, you need to identify the customer insights. How you can do it, one way to do is by taking surveys or talking to people, do cold calling, do emails. ठीक है, you can gather the customer insights by directly reaching to the people who are responsible at that thing. So for us, the responsible gatekeeper or the stakeholder is maintenance manager. वी कॉल देम अप कि सर ये चीज है, दिस इज व्हाट वी आर मेकिंग, वी नीड टू नो कि आपसे मिल सकते हैं कि थोड़ा सा फीडबैक लेना था इसके ऊपर. आई हैव डन दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स एंड इट वर्क्स. ठीक है, वो आउटरीच बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये गैप को आइडेंटिफाई करता है कि वेयर वी आर गोइंग टू प्ले. सो दिस इज व्हाई द मार्केट रिसर्च इज नीडेड. एंड यू ऑल्सो नीड टू टेल कि आपके कॉम्पिटिटर, यू नीड टू ऑल्सो इन्फर कि आपके कॉम्पिटिटर क्या ऑफर कर रहे हैं, किस प्राइसिंग में ऑफर कर रहे हैं. ठीक है, इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट डिलीवरी एफिशिएंसी, then it should be cheaper. Either efficient, it should be efficient, or it should be uh, more affordable for them. This is how you can create a value for the customer. So next is, अब आपको पता लगे कि आपको मार्केट रिसर्च में क्या करना है, then you talk to the potential users, test the assumptions of the product, and refine based on the feedback received. You can do it by surveys, you can take interviews, or you can just call them up and ask for 5-10 minutes कि सर आपसे बात करनी है, ये मैं बना रहा हूँ, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए. एवरीवन इज वेरी अकोमोडेटिव. सब लोग आपको बताएंगे कि क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, अनलेस अगर वो कहीं पे स्टक है तो आप बोल दो कि भाई मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे दो, आई कैन कॉल यू अप अगेन, आप मुझे बता दो. परसुएसिव बनना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, बिकॉज यू आर एट द हेल्म ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, एंड यू हैव टू सी कि कहाँ पे आपको अपनी वैल्यू सामने वाले से मिलेगी. टेस्ट योर अजम्पशंस. सो बाय दैट आई मीन कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द मार्केट. तो जो जो अजम्पशंस आपने लिए, जैसे कि मेरे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लूँ कि मेरा आईओटी डिवाइस एक ट्रक की फ्लीट पे भी लग जाएगा, मैं ट्रक ड्राइवर्स के पास जाऊंगा, मैं अपने assumptions ले सकता हूँ उसमें. ठीक है, सो दे नॉट बी वेरी अकोमोडेटिव बिकॉज उनका जो वैल्यू एडिशन है बहुत छोटा है. फॉर एग्जाम्पल, उनका अगर ट्रक का ब्रेकडाउन भी होता है, दे कैन फिक्स इट बाय देमसेल्फ, और उनका इतना डिले नहीं होता है, और वो भी बहुत कम होगा. बट अगर किसी इंडस्ट्री में एक ट्रांसफार्मर फट गया, तो उनका प्रोडक्शन लॉस जो है वो इस खर्चे से 120-200 टाइम्स बहुत ज्यादा होगा. सो यू नीड टू सी कि आपको आपके जो लिए हुए assumption हैं, that needs not to be relied on gut feeling, and you have to test it by speaking to the customer, by speaking to the market leaders. You can also reach out to mentors who are well established. For example, during my research phase, I reached out to multiple people, including people who have held CEO positions at BSES Rajdhani. ठीक है, they sometime you need to pay to visit them. ठीक है, तो you have to take that risk.
ठीक है, नाउ यू हैव हैड, आपका आइडिया है, वैलिडेटेड है। अब आप क्या करोगे, फीडबैक है आपके पास, नाउ यू हैव टू बिल्ड योर प्रोडक्ट। ठीक है, उसका प्रोटोटाइप करना है आपको, टेस्ट इट समवेयर, टेस्ट इट ऑन अ रियल टाइम। आप यू while you are speaking to 100 of the customers, you will be able to convince one of them कि भाई सर आप मुझे पायलट टेस्टिंग करने दो। You do it pilot testing over there, make that customer happy, refine your product, collect the feedback, then again improve and make a product which is acceptable to the market. You will have your product ready. ठीक है, once you have the product, you'll have to see how you can uh, validate the demand and willingness to pay। ठीक है, अब आपने जो 100 लोगों से बात करी शुरू में, यू विल सी कि मेरे पास कितना ट्रैक्शन आ रहा है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे को लेने, मेरे प्रोडक्ट लेने में, इवन इफ आई इम्प्रूव। ठीक है, देन यू हैव टू मेजर द रियल ट्रैक्शन, यू हैव टू सेट अप द प्राइसिंग कि मैं कहाँ पे पोजीशन करूँ। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आप क्या यूएसपी दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मॉनिटरिंग था, ठीक है, वी इंट्रोड्यूस कंट्रोलिंग एज वेल। ठीक है, तो एनी पर्सन, इवन इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड, द रिस्क आर मोर कि उसको शॉक लग सकता है फ्रॉम डीजल जनरेटर्स, ही कैन डायरेक्टली टर्न इट ऑफ फ्रॉम द निक ऑफ हिज क्लिक। So these are the real things which you need to experiment on the pricing. So अडॉप्शन कितना है, प्राइसिंग कितनी सेंसिटिव रहेगी, और उसका ट्रैक्शन कितना आ रहा है। यू मे नॉट गेट, आपने कोई डिवाइस 50,000 की रखी है, आपको 2 कस्टमर मिल रहे हैं, यू यू ब्रिंग डाउन द प्राइस टू 15,000, यू गेट 1,000 ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्राइस की टेस्टिंग करना, और आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि जहाँ पे आपका ट्रैक्शन भी आ रहा है और आपका प्राइस भी उतना है कि इट कैन बूस्ट द डिमांड। तो नेक्स्ट इज कि अब नाउ यू हैव लॉन्च द प्रोडक्ट, you have the traction, you need to analyze the feedback and improve the product, you need to work on the product, कि मैं कैसे इसको improve करूं, how can I give more value to my customer who are paying me। ठीक है, you can do it by introducing new features, you can improve the existing user experience। ठीक है, this could be एनीथिंग, आप ऑनबोर्डिंग स्मूथ कर दो, आप उनका मतलब उनके हेल्प डेस्क सेटअप कर दो कि योर इश्यूज विल बी रिजॉल्व्ड इन 48 आवर्स। आप कुछ भी कर सकते हो, यू इम्प्रूवमेंट इज अनलिमिटेड। ठीक है, आप हल्का सा भी इम्प्रूव करोगे, इट विल ऐड वैल्यू। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसा भी हो सकता है कि यू आर गोइंग आउट इन द मार्केट एंड देन यू आर सीइंग कि भाई मेरा प्रोडक्ट चल नहीं रहा, बट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन यू विल आल्सो सी कि भाई ये नहीं तो ये चल सकता है। Then you have to be very adept कि you can pivot it as and when needed। ठीक है, now once you have the idea, you have the pilot product, you have the MVP ready, you have tested it uh, on the ground, you need to develop a go to market plan, you need to have a sales and distribution strategy, and you also need to have a milestone which should be very clear कि कैसे कैसे मैं लॉन्च करूंगा, what would be my strategies and all those things। गो टू मार्केट प्लान के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स रहते हैं, वेयर वुड इट बी लॉन्च्ड, मेरे प्लेस क्या रहने वाला है, वेयर वुड इट बी पिच्ड, कि मेरी ऑडियंस कहाँ रहने वाली है, व्हाट वुड बी द प्राइसिंग, व्हाट वुड बी द ज्योग्राफी, एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन दिस गो टू मार्केट प्लान। You can search on online, you can get many resources on this go to market plan, बट द रियल एम्फेसिस इज कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको एक डायरेक्शन सेट करता है, दिस इज यू नीड टू फोकस। और ये गो टू मार्केट प्लान कैन बी चेंज एनी टाइम बेस्ड ऑन द ट्रैक्शन। ठीक है, आपको नहीं आ रहा है, यू कैन रिड्यूस द प्राइस, यू कैन गो इनटू डिफरेंट ज्योग्राफी, यू आर नॉट गेटिंग ट्रैक्शन समवेयर, आप यू कैन ऑल्सो, यू हैव अ प्रोडक्ट, यू कैन गो इनटू एनी ज्योग्राफी, यू कैन एक्सपैंड टू एनी इंडस्ट्री। ठीक है, आपका एक यूज केस उसी प्रोडक्ट से काम नहीं कर रहा है, मे बी देयर कुड बी सम एल्स यूज केस व्हिच कैन बी implemented for us।
I'll give you an example. हमारा monitoring and controlling solution via IoT can be used in cold storage for perishable goods. Perishable goods के लिए they need temperature and humidity control. तो हम अपने डिवाइस से we can control the temperature of the closed enclosures जहाँ पे perishable goods रखे जाते हैं. We can control the temperature, we can control the humidity. This is where we have pivoted, and we have expanded our product base. ठीक है, this is how you can take it to the market basically. So I would like to finalize or the share some conclusion on the things that I've talked about. You have to validate and protect your resources. So you have to test again and again, and once you are sure कि हाँ अब मेरा product 1 to 10 हो गया है, now you scale it from 10 to 100 or 10 to 1000, because आप whenever you are working as a founder, you do not have resources, unlimited resources. आपके पास कम पैसा होगा और बहुत सारी चीजें होंगी करने के लिए. You have to be very frugal in deciding which route you take. ठीक है. And secondly, stay user obsessed every time. uh, कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर क्या चाह रहा है, उससे वो हमेशा गैदर करते रहो. ठीक है. एंड मेक श्योर आप गैदर कर रहे हो हर महीने, यू आर रिफ्लेक्टिंग व्हाट यू हैव गैदर्ड एंड देन यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट. दैट इज व्हेन यू कैन hold on to the customer, and the customer will be paying you recurring business, giving you recurring business. Okay. And always start small, learn quickly, fail fast, adapt, and then move forward. This is my key takeaways for validating your idea and taking it to the market. Thank you very much. If you have any questions, feel free to ask. Thank you so much, Harsh, for this wonderful session. I believe that students learn something, and hopefully they will apply the same thing in their journey as well, the startup journey as well. Some it's in a beginning of their career, so they might not take it seriously. Some may take it seriously, some may not take it forward. But thank you for this wonderful session. Thank you for your time. Thank you so much. Welcome. Thank you.